Hello students, welcome to Real Academy. My name is Yash Waze and today we are going to learn poem that is of 8th grade Maharashtra State Board which is written by Guy Boss. So the name of the poem is The Vet. It's a 4.1 poem in your textbook. What do you mean by vet? Vet is a veterinary doctor. Okay, the full form of vet is veterinary doctor. So many students, after their completion of their 8th grade, 9th grade, 10th grade, they will go for science stream. That is a wonderful stream. And those who go for science stream, their main aim is to go for MBBS. That is the medical stream. So majority of the students go for medical stream after going to the science, and that is a wonderful field, which means you will be doctor in future. So the work of doctor, yes, like you might be knowing that doctor earns a lot. काफी पैसे मिलते हैं डॉक्टर्स को. Just for treating a patient, he may charge any cost. Like the way he want, he may charge. But do you think that cost is worth, that fees are worth? Yes, my dear students. Because those doctors have to pay fees during their medical course. After completion of their medical course, there is internship also. There is an internship period. And that internship period, afterwards also they have to struggle. There is a lot of efforts, lot of studies, lot of knowledge they have to gain during their entire process. It takes approximately 6 to 7 years minimum. And when they charge, it seems like they are charging more and more. But it is not so, because work of doctor is difficult. Treating a patient, just imagine when they do surgeries, when they do operation, when they treat patient, slightest mistake से बहुत फर्क पड़ता है, my dear students. When they do surgery, operation, and when the heart is beating, that is the most difficult part. When they operate and heart beat hota hai, they cannot stop that heart while operating it. So while the heart is beating, they have to operate it. So it is very, it's tough to manage all these things. So doctor who treats human beings, it is difficult. But more than that, doctor who treat animals, just imagine, if human beings, they are not feeling well, they can express that I have a stomach ache. They can express my head is paining. But what about animals? They cannot express. They cannot speak. They cannot tell doctor that I have this and this problem for so many days or so many months, and there is no such expressions. Doctor have to think what may be the issue that animal might be facing. So it is very difficult to know, and hence the job, the task, work of veterinary doctor is much more difficult. So here we are starting our warming up session. And warming up is just like before, it's like when you exercise, उसके पहले warming up करना पड़ता है, warm up करना पड़ता है. So it is in the same manner, few questions to create an environment, to create surrounding. Let's see. Where do we find all types of wild animals in urban areas? So you can answer it in way like you can find, you can observe, you can see wild animals in urban areas in zoos or maybe forest areas. Do you have a pet? क्या तुम्हारे घर पे कोई pet animal है? Yes, I have. Maybe dog, maybe cat, maybe birds. And if no, you can answer it in that way like no. And plus, you can add 4 to 5 sentences in it to make it as personal response question. How do we help animals and birds? हम लोग animals and birds को कैसे help कर सकते हैं? So we can help animals and birds by treating them well. हम लोग treating them kindly you can use. How do we help animals and birds? We can help animals and birds by treating them kindly. उन्हें काफी प्यार से kindly treat कर सकते हैं. We can care for them and we can love them. So next question is,
हाउ डू वी रियलाइज दैट एनिमल्स आर नॉट फीलिंग वेल? हमें कैसे पता चलेगा कि एनिमल्स आर नॉट फीलिंग वेल? सो वी कैन नो इट बाय चेंजेस इन देयर बिहेवियर पैटर्न, changes in their eating habits and maybe changes in their activity. So वो जो जैसे वो behave करते यूजुअली, वो अगर नहीं करते होंगे, अगर उनकी eating habits change हुए होंगे या उनकी activity में कोई फर्क हुआ होगा, तो हमें पता लग सकता है. Who gives medicine or treatment to sick animals and birds? उसका आंसर है veterinary doctor. So जो animals का डॉक्टर है veterinary doctor. He treats them and he gives them medicine. So next is about match the following. Try to match the specialist doctor with who or what they treat. यहाँ पे एक लिस्ट है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का, एंड देयर इज अनदर लिस्ट हु और व्हाट दे ट्रीट. वो क्या ट्रीट करते हैं? जैसे कि डेंटिस्ट. डेंटिस्ट किसका डॉक्टर होता है? दांतों का. सो यू कैन आंसर इट एज टीथ. सो फर्स्ट डी. Cardiologist. Cardiologist is related to heart and you can answer it as G, heart. Ophthalmologist, it is related to eyes. So तुम लोग यहाँ पे ophthalmologist को eyes से match कर सकते हो, F. Orthopedic. Orthopedic is related to bones. So तुम लोग उसे A match कर सकते हो. Pediatrician, वो generally kids का डॉक्टर होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं छोटे बच्चे. So you can 5 C. Neurologist related to brain, okay, spine. So you can 6 B, brain or with spine. Veterinary doctor. So veterinary doctor, of course, ये animals and birds का डॉक्टर है. Let's see next. Why pediatrician and veterinary have a tougher job to diagnose their patient's illness? Write down the most important reasons. So इनका ये जॉब है वो क्यों टफ होता है पेडियाट्रिशियन का एंड वेटरनरी डॉक्टर का बाकी डॉक्टर्स से? क्यों टफ होता है? क्यों वो डायग्नोस मीन्स ट्रीट करना पेशेंट्स को, क्यों इनके लिए टफ जॉब है? यू हैव टू स्टेट फ्यू रीजंस. इट इज अ पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, सो यू कैन आंसर द वे यू वांट. जस्ट सी टू इट दैट इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट and the sentence formation is correct. Let's see what is given in the poem. These are the first few lines of this poem. So to be successful and competent vet. एक successful and competent means a kind of eligible or having very good knowledge and ability, जिसके पास बहुत ज्ञान है, experience है. So यहाँ पे knowledge and ability, उनके पास बहुत knowledge भी है and ability भी है. ऐसा vet बनने के लिए, ऐसा veterinary doctor बनने के लिए needs knowledge exceedingly wide. उनको बहुत सारा, एक्सीडिंगली मीन्स वेरी मच, बहुत सारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है. सो एक वेटरनरी डॉक्टर के पास बहुत नॉलेज होना चाहिए, बहुत एनिमल्स का स्टडी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड देन ही कैन ट्रीट हिज पेशेंट्स वेल. फॉर ईच ऑफ द पेशेंट ही इज लाइकली टू गेट possesses a different insight. For each of the patient he is likely to get, which means एक तो पेशेंट होगा नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स होंगे. So every time when new patient or animal comes, he must know about that animal. He must know what may be the cause of pain, suffering, and possesses a different insight means अलग अलग animals को देखने के बाद उनके अंदर different types of size of organs inside the body, इनके बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है. See, human beings they have almost all organs same. सबके ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ऑर्गन्स है वो सेम होते हैं. इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड, मे बी अडल्ट मेंबर, मे बी ओल्ड मेंबर, उनके अंदर जो ऑर्गन्स है वो सेम ही होते हैं. बट एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन्स है इट डिफर्स बिकॉज देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स और उनके बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. उनको स्टडी करना, एक तो एनिमल है नहीं, बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारे बर्ड्स है इस वर्ल्ड में, एंड उनको ट्रीट करना काफी डिफिकल्ट है. सो इट इज डिफरेंट इनसाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी. सो टू बी कॉम्पिटेंट वेट बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए. एक सक्सेसफुल वेट होने के लिए बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए. फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स लाइकली टू गेट, जो भी पेशेंट्स आएंगे वेटरनरी डॉक्टर के पास,
उनके पास डिफरेंट इनसाइड, मतलब उनके पास possess मीन्स टू हैव डिफरेंट इनसाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. नेक्स्ट स्टैंजा सेज दैट he must know why the cat is refusing her milk. So veterinary doctor must know after looking at the cat why that cat is refusing her milk, why that cat is denying her milk. So cats को generally milk बहुत अच्छा लगता है. So when they drink that milk, they enjoy it. But if they're refusing, something messy must be there. कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस cat में, maybe. And इसीलिए वो cat milk को ना बोल रहा है, मिल्क को रिफ्यूज कर रहा है. वाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन. डॉग को जो बोन है वो काफी 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 अच्छा लगता है. एंड दैट डॉग इफ द डॉग इज रिफ्यूजिंग बोन, if he is refusing that bone, then there may be some sort of issue. Why the coat of the horse is not shining? So shining like a silk, which means that why the coat, ये जो coat है, fur like hair, सो वो जो हॉर्स के ऊपर जो हेयर है, कोट है, सो वो शाइन क्यों नहीं हो रहा? जनरली वो शाइन होता है इफ देर हेल्दी, बट इफ इट इज नॉट शाइनिंग लाइक अ सिल्क, देन देर में बी सम सॉर्ट ऑफ इशू. वाई द पैरट डज नथिंग बट ग्रोन. ये पैरट कुछ भी नहीं कर रहा. सो पैरट सिंग्स, पैरट is enjoying, parrot responds to whatever we say, and parrot enjoy करता है अपना life. It is sad that human beings cage that parrot and that parrot loses his freedom. That's a different part. But parrot कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ groan कर रहा है. What is the meaning of groan? Groan means a sound of pain. वो pain से काफी दर्द हो रहा है, parrot को चिल्ला रहा है parrot. And there may be some problem. So veterinary doctor must know why the cat is refusing her milk, why the dog is not eating his bone, why the coat of the horse is not shining like a silk, and why the parrot is doing nothing but he is just groaning. Why so? All the things veterinary doctor must know. I think you must have enjoyed it कि किस तरीके से वेटरनरी डॉक्टर इन एनिमल्स को ट्रीट करता है. एंड ट्रीट करते वक्त वेटरनरी डॉक्टर को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करने पड़ते हैं. इन द फर्दर स्टैंजास देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर मेंशन, जो आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं. आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग. सो कीप अटेंडिंग lectures which are provided by Real Academy, and they're much interesting. So have a good time. Enjoy your day. Goodbye. Thank you.